Hello everyone. In this video we will learn some more basic concepts about Microsoft Excel. Microsoft Excel, whenever you will open your Microsoft Excel program, one workbook will open with 3 worksheets by default. So जब भी आप Microsoft Excel का प्रोग्राम ओपन करोगे तो आपकी एक वर्कबुक ओपन होगी जिसमें 3 वर्कशीट्स होंगी बाय डिफॉल्ट. यू कैन सी शीट 1, शीट 2, शीट 3. So what is workbook? Workbook is the collection of worksheet. Like your normal book is the collection of pages or you can say sheets, your Microsoft Excel workbook is the collection of worksheet. So what is worksheet? Worksheet is the individual page of your workbook which is the collection of rows and columns. So rows are horizontal and columns are vertical. So there are 3 worksheets by default in your Microsoft Excel 2007 program. We can add as many worksheets as we want as per our choice. And this is the formula bar. Formula bar is used for performing basic arithmetic calculations. We can perform calculations in formula bar and whatever data you will type in cells, it will automatically shown in फॉर्मूला बार. जो भी आप डेटा एंटर करोगे अपने सेल्स में वो आपका फॉर्मूला बार में शो होगा. इसको हम शीट टैब भी बोलते हैं. दीज आर शीट टैब. शीट टैब्स आर यूज्ड टू स्विच बिटवीन द शीट. जैसे मैं शीट 2 पे जाना है तो शीट 2 पर क्लिक कर दूंगी, शीट 3 पर. सो लाइक दिस आई कैन गो फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर. सो ये इसको बोलते हैं हम शीट टैब. और ये नीचे होता है आपका स्टेटस बार जो आपका स्टेटस शो करेगा. ठीक है. सो दिस वे नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन एंटर डेटा इन योर सेल्स. सो वेन एवर यू विल क्लिक एनी ऑन एनी सेल इट विल बिकम एक्टिव. जब भी आप किसी सेल पर क्लिक करोगे वो आपका एक्टिव हो जाएगा एंड यू कैन सी इट्स एड्रेस इन द नेम बॉक्स. सो आई एम एंटरिंग सम डेटा. सो अगर आपको सिंपली डेटा एंटर करना है किसी भी सेल पर क्लिक करो. लाइक आई वॉन्ट टू एंटर सम डेटा इन द फर्स्ट सेल, क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सिंपली टाइप फ्रॉम योर कीबोर्ड. So like I have entered name, and if you want to go to right side cell you can click right arrow key or you can use tab key. आप right arrow key का यूज कर भी right side के सेल पर जा सकते हो या फिर tab key का यूज कर भी आप right side के सेल पर जा सकते हो. So here now I am using tab key. Okay, so this way. So if you want to go to the downward cell you can use down arrow key or you can simply go by clicking from your mouse. So like I am entering some data, some marks out of 10. So like this. So now I have used my mouse. So you can use mouse, you can use arrow keys. Okay. So like this you can go from one cell to another. So like this. So like this you can enter data in the cells. Okay, so you can see now this is your left align and this is right align. So what you observe, your alphabets, your text data is left aligned and your numerics data is right aligned. This is by default. जब भी आपने वर्कशीट में एंटर करोगे जो भी आपका टेक्स्ट डेटा होगा वो लेफ्ट अलाइंड होगा एंड वॉट एवर योर न्यूमेरिक डेटा इज देयर दैट विल बी योर right aligned. So now I will tell you what are the types of data that you can use in your Microsoft Excel. First is your text data. What is text data? Text data is the combination of alphabets and numbers, and we cannot use text data for performing calculations. अपने text data पर आप calculations को perform नहीं कर सकते. Second type is numeric data. We can perform calculations on numeric data and it consists number from 0 to 9 and by default they are right aligned. Next is your formula data. Formula is used for performing calculations, for performing arithmetic calculations. You can easily perform calculations on your formulas by using formulas. So in this video I told you some basic concepts about Microsoft Excel, like what are the types of data, what are some components of Microsoft Excel window. So in the next video we will learn something more about Microsoft Excel.
So if you like this video, then don't forget to hit like and don't forget to subscribe my channel if you have not subscribed till now. Thank you.